Welcome to English class. Here the full chapter of mark distribution are there. Here distribution of subject and marks, full marks 100. Book 1, poem 5 poem are there, contains 10 marks, 5 proofs contains 10 marks, total 20 marks. Book 2, 5 6 story contains 10 marks. Book 3, dictionary skill 5 marks, report writing 10 marks, summarizing 8 marks, note making 7 marks, diagram or chart 5 marks. Book 4 contains grammar, correct the error 10 marks. 5 रे रहिला essays 10 marks, unseen passage 15 marks, total 100 marks are there. Here my chapter is poem. Let us discuss what are the poems and it's a first poem that we have to discuss today. William Wordsworth, whose poem is Daffodils. First chapter, poem number 1, Daffodil. Here the poet is William Wordsworth. He is born and decade century are there, 1770, 1850. Here William Wordsworth is a poet of nature, who is also a pioneer of natural beauty. Pioneer means अग्रदूत, जे कि जने प्रकृतिर बाहक भावे, who compares the nature as his guide, guardian and so much of things. Today we are going to read his one of the best poem, or we can say that natural poem, Daffodils. Daffodils is a flower. Daffodils is a flower, a natural entity. Which flower? It is bell shaped. It is bell shaped, golden yellow color flower. Bell shaped golden yellow colored flower is daffodils. When the poet, along with his sister Dorothy, goes to the Ullswater in evening, the poet separated by his sister and moving alone. All of a sudden, he sees daffodils, and the heart of a feelings for this natural entity creates havoc in his mind, for which he writes this poem. His poetic theory is reflected here. According to Wordsworth, poetry is nothing but spontaneous overflow of powerful feelings that is recollected in tranquility. That means when feelings shapes as a letter or words, it is a poem, or poem creates ଭାବନାର ଉଦ୍ରେକ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦର ଆକୃତି ନିଏ ସେତେବେଳେ କବିତା ପାଲଟି ଯାଏ। ସେହିଭଳି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କବିତା ଏକ ଡାଫୋଡିଲକୁ ଶିରୋନାମ ଆକାରରେ ନିଆଯାଇଛି। ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଟା ପ୍ରକୃତି ଭିତ୍ତିକ କବି।
जेहेतु से प्राकृतिक जिनिस टीनी उपर लिखिंट टीनी एंटिटी उपर आम देखा जे प्रथम स्टांजार से कौन अच्छी आ से कौन लिखिं डाफोडिल फूल गुड़ी से कौटी देखिले किभली अवस्था देखिले कौन कौन से सब या भर टोटाल डिस्क्रिप्शन अच्छी आम प्रथम यार लेटर मीनिंग करके एक्सप्लेनेशन को जीवा लेट्स सी हियर द पोएट द फर्स्ट स्टांजा इज हियर फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम I wander lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. Let's see. I wandered means moved, lonely, alone, separate from people or everything. Separate. Being isolation is alone. Isolation means एकुटिया एटे मु गति करिबा और भूलिबा as a cloud that floats on high over vales means valley. The poetic form valley is vales. The poetic form valley is vales. उपत्यका ताको जहा को हम कहि परिबा valley means उपत्यका hills. ए देखिबा मु एक मेघखंड भली एकुटिया बुलुथिली दार्स फ्लोज दार्स माने डाफोडिल फूल गुड़ाक डाफोडिल फूल फ्लोज भासुथिले फ्लोज माने भासीबा ओवर वैलीज उपत्यकारे एंड हिल्स पर्वत व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ क्राउड सेतबेले मु देखिबा को पाइली गुटे क्राउड जनगहली की प्रकार जनगहली ने होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स होस्ट हला गुडाए डैफोडिल सुनेली कलर डैफोडिल मान डैफोडिल रो कलर रंग होची सुनेली रंग डैफोडिल को से देखिले बिसाइड द लेक कोउटी देखिले द बेनीथ द बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री बीनीथ मीन्स अंडर तले बिसाइड पछरे लेक ह्रद पछपटे गछ तले से देखा पाइले डैफोडिल फूल गुड़ा से कौन करुले फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज फ्लटरिंग मीन्स टू एंड फ्रू एपट सेपट डांसिंग नाचुले इन द ब्रिज मलय पवन द्वारा ब्रिज है मलय पवन बाटा स्लो विंड कहते मलय पवन तब यार माने आम अर्थ बाहर कर जेते बेले कवि एकुटिया बुलुथिले मेघखंड होई कोउटी बुलुथिले ना प्रकृति कूल आम ये कह प्रकृति कूल जो पार्क रे बुलिबा को जाइछंती ऑल्स वाटर पार्क रे बुलिबा को जाइछंती कवि देखिले जे उपत्यका पर्वत पाखरे गोटे जनगहलीपूर्ण जहाँ थिला होची सुनेली रंग डैफोडिल से गुड़िक लेक पछपटे थिले गछ तले भी थिले जहाँ कि पवन द्वारा एपट सेपट होगी नाचुथे लेट्स गोइंग टू let's go to discuss about his explanation detailed explanation first the what we have got from this stanza we should do write in few words which is helpful to you. Let's discuss. Before going to the detailed explanation we have to know about the story behind this poem. Once William Wordsworth and his sister Dorothy Gooch Allswater named park for a trial of the evening.
where both William Wordsworth find himself separated from his sister Dorothy, and being separated from his sister, he saw a crowd or a teeny top of the flowers of daffodils over these valleys, and went there or goes there and sees that the host of daffodils, the daffodil are doing their movement that is attracted by the poet when he goes his home in the time of solitude. The daffodil flowers, the dance are twinkling his inward eye and gives his eternal heart too much of pleasure that pleasure is expressed with words like this poem. Yes, okay, I think you got it. Here, the first stanza, I want to share detail about this. It has been written here. I have already written. So let us discuss what are the theme. What are the theme we have extract from that stanza 1. Yes, stanza 1 explanation. Daffodil poem. The poet is moving lonely in the park Allswater, while he sees daffodil floats in valley that are golden colored. कवि Allswater पार्क रे एकुटिया बुलुछंती जेतेबेले से देखिले कौन ना उपत्यका रे हिल्स रो उपत्यका रे डाफोडिल फूल गुड़ाक भासुछंती हला जहार कलर रंग थिला सुनेली रंगर आम आगुरी कहीचे द बेल शेप्ड गोल्डन येलो कलर स्वीट फ्रेग्रेंस फ्लावर इज डाफोडिल. He sees the daffodil beside the lake and under the tree fluttering and dancing in the breeze. He sees से देखिछंती कौन देखिछंती ना डाफोडिल फूल गुड़ाक केउंटी देखिले ना beside the lake beneath the tree लेक ह्रद पछपटे एवं गछ तले से माने कौन करुथिले ना डांस फ्लटर एपट सेपट होउथिले नाचुथिले पवन द्वारा पवन तांको फोर्स को धीर मलय पवन बोही चलीची फूल गुड़ाक एपट सेपट हेची पूरा स्लोली से माने डांस करुचंती डो डांस एक्सप्रेस हेची निहाती आउ गोटे कथा कहवाक रखे ठीक ना कविंकर जो पोएट्रिक थियोरी विलियम वर्ड्सवर्थ जो पोएट्रिक थियोरी एटी प्रेजेंट है रिफ्लेक्टेड है कवितार जहा है कौन पोएट्री इज नथिंग बट स्पॉन्टानियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स दैट इज रिकलेक्टेड इन ट्रांक्वालिटी जार अर्थ थिला जेतेबेले आमे कौन सी को सौंदर्य जिनिस को लक्ष्य करती देखती आमर भावना सेठी जेते मात्रा रे परिव्यक्त न हुए जेतेबेले आमे एकुटिया थांती शांत कांत कोमल निर्जनतारे
जनविहीन परिस्थिति रे सेतବେଳେ से फूल गुड़ाक आम आखि आगे नाचती नाचिले नाचिला परे आमे से प्रकार गोटे अद्भुत शांति प्लेजर लाभ करती जहाँकि अविस्मरणीय से जो शांति डाफोडी फूल को से जो देवे देखिले तार प्लेजर से परे पाई से जो प्लेजर मोमेंट को ये से कविता आकार डिस्क्रिप्शन देती भावना जितेबाला शब्द रूप निए से एभली कविता उपस्थापित हुए जहाँ हम ये शिखिले इन माय नेक्स्ट क्लास we will discuss about all 3 stanzas in this poem. I hope this class is beneficial for you. Stay home, stay safe, read this topic carefully, find out the meaning. If unable to understand, then doubt clearing class is going to happen in this online class and I will be able to understand to you.